this module will deal with the protein kinase activation, that how it functions with the cell signaling. Now, protein kinase again is a kinase enzyme that modifies other proteins by chemically adding phosphate groups to them. That is the phosphorylation. Common understanding is that the phosphorylation means the addition of phosphate to that protein, and whenever in this process ATP or adenosine triphosphate is involved, that becomes a kinase. That is the energy activation. Now, for example, in this cartoon, we can see that there is D-phosphoproteins on one side, protein kinase with the ATP, adenosine triphosphate, that is the addition, and we get a phosphoprotein attached phosphate group on it on the top, and this is the modification of that enzyme, and it has got a modified function to play. Now, autophosphorylation sites, their function is, as a matter of fact, that on RTKs they can carry out two different functions. दो मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन हैं वो ये कैरी आउट करती हैं. They can, one, regulate the receptors kinase activity. कि receptor kinase activity जो है उसको कंट्रोल करती हैं, उसको रेगुलेट भी करती हैं. माइंड यू, द रेगुलेशन एंड द अटैचमेंट, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. रेगुलेशन मीन उनको कंट्रोल करते हैं कि वो कम होती हैं या बढ़ जाती हैं या किस तरह. देन दे आल्सो सर्व एज बाइंडिंग साइट फॉर साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. क्या होता है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी हैं. सो दोज मॉलिक्यूल्स दे सर्व एज, these proteins serve as the binding site. साइटोप्लाज्म में ये बाइंडिंग साइट बन जाती हैं for those signaling molecules. Now, kinase activity is usually controlled by autophosphorylation. What do we mean by autophosphorylation? On tyrosine residues, autophosphorylation means that is automatically, with the presence of ATP, they become phosphorylated and they become active in the activation loop of kinase domain. As we have seen in the previous cartoon, that there is a activation there is a activation loop for that kinase. Now, the activation loop, when unphosphorylated, जब इसमें unphosphorylated होती है, जब ये reverse cycle होता है, तो वो क्या होता है? It obstructs the substrate binding site. जाहिर है कि when it will go the other way, तो ये क्या करेगी कि जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, जो इसका सबस्ट्रेट है एंजाइम का, उसको रोक देगी, क्योंकि ये रुक गया हुआ है, एंड डायरेक्टली प्रिवेंटिंग एटीपी फ्रॉम एंटरिंग, कि एटीपी फिर उसमें दाखिल नहीं हो सकेगी, उसके साथ अटैच नहीं हो सकेगी, चुनाचे सेल सिग्नलिंग जो है वो हिंडर होगी या हैम्पर होगी. Now, following its phosphorylation, activation loop is stabilized in a position that is away from substrate binding site. ये जो बाइंडिंग साइट है उस सबस्ट्रेट का, जो उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का, उससे ये परे होके अवे फ्रॉम दैट ये स्टेबलाइज होगा एंड रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ द काइनेज डोमेन. क्या होगा फिर नतीजतन? नतीजा ये होगा कि जो काइनेज का डोमेन है ये उसकी एक्टिवेशन कर देगा, उसको एक्टिव कर देगा फॉर द सेल signaling. Now, kinase domain activates other kinase things. Now, once their kinase domain has been activated, क्या होगा? The receptor subunits proceed to the phosphorylate each other on tyrosine residues. Again, जब ये एक्टिव होगा 80 से, तो फॉस्फोरिलेशन जो है वो किधर होगा? टायरोसिन रेजिड्यूज की तरफ, एंड
that which is present in the region adjacent to kinase domain. Kinase domain के जो करीब होगा उसको ये फास्फोराइलेट कर दे. अच्छा, ये सारे जो चीज़ है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये उसको एक्टिवेट करेगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तो मैसेंजर जो हैं, जो रिसेप्टर के ऊपर हैं, उनका भी चेंज होएगा and they will give the different structure. For example, in this cartoon, you can see that there is a receptor, tyrosine kinase, then the signal is coming over them. In the third, it becomes active and the phosphorylation sites, they are attached to this, and the signaling molecule, it is now complete, it is attached to the cell inside. अब आप देखें कि ऊपर क्या एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो है, एंड देन इट इज इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म दैट इट इज activated and it gets those molecules attached to it. Now, it is these autophosphorylation sites that act as binding site for cellular signaling molecule. तो चुनाचे ये वो ऑटोफॉस्फोरिलेशन साइट्स हैं जो हमने देखी, जो कि बाइंडिंग साइट फॉर सेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन के काम आती हैं. सेलुलर जो सिग्नलिंग है, इट प्रोसीड्स through these, and the phosphorylation, autophosphorylation of the tyrosine, it plays an important role.